बुलेटवाले जे आहेत ना, बुलेटवाले त्यांना पकडलं पाहिजे आणि कंटिन्युअस 1 तासांना 1 तास कंटिन्युअस न न थांबता मार द्यायला. बाकींच्याकडे लोकांकडे काही गाड्या नाही करत. बाकींच्याकडे मर्सिडीज बेन्झच्या गाड्या पण असा आवाज नाही करत. हे बुलेटवाल्यांना कायच त्याचं एवढं हे असतो प्रभाव असतो. Today we are going to see next remaining points from general pharmacology, particularly from pharmacodynamics part, and we are going to see some examples of important adverse drug reactions. In the previous sessions, we have seen regarding the pharmacodynamics and different kind of adverse drug reaction. We have seen these parts. What is meant by adverse drug reaction, side effect or untoward effect, then toxic effect. Adverse effect means any unintended or undesired or any noxious effect of drug when drug is used in the diagnosis, treatment or mitigation. Pharmacovigilance deals with the monitoring, it deals with the epidemiological study of your adverse drug reaction. Side effect, most of the time it is a predictable and may or may not be extension of pharmacology effect. For example, dryness of mouth caused by atropine. Untoward effect, again it is an undesired effect of drug but produced in a therapeutic doses of drug. For example, potassium loss due to the diuretic therapy. Toxic effect means due to use of drug in a higher dosage. So, for example, respiratory depression caused by morphine, that is a kind of toxic effect. Intolerance means if your body is not accepting the drug, there is intolerance. For example, after giving drug, you start vomiting or you start some allergic reaction or you that is a, most of the time intolerance is genetically mediated. Okay, so that is a failure of drug tolerate. Idiosyncratic or genetic mediated reactions. We have seen hemolysis in the patient with glucose 6-phosphate dehydrogenase deficiency by the oxidant drug like primaquine, phenytoin, sulfonamide, etc. Allergy, we have seen the different type of allergy. We have seen the different type of adverse drug reaction. A for augmentation, B for bizarre, C for chronic, D for delay, E for after treatment effect or withdrawal effect, F for failure of therapy. So A is a treatable dose dependent. Example is hypoglycemia caused by insulin or hypoglycemic drugs. Then B for bizarre. Bizarre means most of the idiosyncratic reactions they are type B and they are without any notice, without any alarm. Okay, they are unpredictable and dose independent. So anaphylaxis caused by penicillins and other antibiotics or allergic reaction to the antibiotics. Now type C adverse drug reaction chronic used in okay and due to use of chronic use of drug. So due to chronic use of NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory drugs or due to chronic use of your painkillers in the arthritis or gout. So that leads to peptic ulcer. So peptic ulcer was by chronic use. Type D, teratogenic effect of drugs. Type E, withdrawal symptoms of drugs. Sudden withdrawal of therapy. Well, type A, failure of drug therapy. We have seen this adverse drug reaction. I am repeating it because it is an important point. They are important. Most of the time they used to ask question on this. Next part we have seen types of allergic reaction. Okay, mostly unpredictable type of adverse drug reaction in that you have allergy or hypersensitivity reaction in that you have four types. Type 1 known as immediate, type 2 autoallergy, type 3 complement mediated allergy, type 4 delayed hypersensitivity reaction. We have seen in the details. Okay, unpredictable may in that cytotoxic or pseudo allergic reactions, then idiosyncratic or genetically mediated reactions. We have seen this part also. We have seen this intolerance, idiosyncrasy, type of hypersensitivity reaction in the last session. I will update today the video. We have seen the different types of hypersensitivity or allergic reaction and their mechanism also. We have also seen this. Up to this, we have seen. I think this was the last slide. This slide will start today's session, and this is nothing but the teratogenicity. One of the adverse effect of drug is nothing but the teratogenicity. So, what do you mean by teratogenicity? Teratogenicity is ability of drug to cause a fetal abnormalities in the pregnant woman, and it was described it is described into pregnant woman when or prescribed into pregnant woman. So, what is teratogenicity? So, ability of drug to cause fetal abnormality when it is prescribed or given in the pregnant woman. So, the term was teratogen or teratogenicity. The original term is nothing but the Greek word teratos.
ओरिजिनल टर्म क्या है, ग्रीक वर्ड है टेराटोस। टेराटोस मीन्स क्या है, टेराटोस मीन्स मॉन्स्टर है ना, मॉन्स्टर। तो रॉकी भाई अकेला आता है मॉन्स्टर, बाकी टीम लेके आने वाले या फिर जो होते हैं टीम लेके आए थे उनको बोलते हैं गैंगस्टर। रॉकी भाई क्या आता है, अकेला आता है, तो क्या बोलते हैं उसको, मॉन्स्टर। सो टेराटोस मीन्स मॉन्स्टर। आफ्टर taking this teratogenic drug by a pregnant woman, and what are the consequences of that? So whatever fetus, whatever children are there in the womb of pregnant woman, so they developed some abnormalities. And what kind of abnormalities? So they might be physical, mental abnormalities, growth abnormalities. So like in case of one drug, there is a thalidomide. So in the thalidomide, thalidomide was the drug. It was used for morning sickness. Thalidomide is a drug of 19th century. Now that drug was used to treat the morning sickness in the pregnant women. Pregnant women में जो morning में जो vomiting वगैरह nausea वगैरह होता है, so in that condition, to decrease nausea vomiting in the pregnant woman, that is known as a morning sickness, right? So there is one drug which was used in the 19th century, that is known as a thalidomide. This drug is a seen as depressant drug. This was used to control the morning sickness in the pregnant woman, right? Now it was later observed that after 5 to 10 years, this thalidomide causes the abnormality in the fetus. जो भी बच्चा प्रेग्नेंट वुमन के पेट में है उसको ये abnormality करेगा। कौन सा abnormality करेगा, ये। So this abnormality is known as a phocomelia. You can see there is a absence of limbs. Absence of limbs in this, you might have seen such kind of example or such kind of subjects in the market. So there is an absence of limb. So thalidomide caused thousands of phocomelia in the pregnant woman, and this was known as a thalidomide tragedy. This was described in the books thalidomide tragedy in the 19th century, right? 1920. Phocomelia. Phocomelia means what? Absence of limbs. फोकोमेलिया क्या है, absence of limbs, मतलब ये इनको हाथ पैर नहीं होंगे, there is absence of limbs. So teratogenic drugs, they are the drug, they are capable of doing or they are capable of retarding the growth, they are capable of some causing some birth defect, etc, etc. So there are a lot of teratogenic drugs. So in the thalidomide there is also a question. Thalidomide जो है, this thalidomide is a drug which is available, which was marketed as a racemic mixture. ये क्या है कि racemic mixture, racemic mixture means what? So equal amount of two enantiomers, equal amount of two enantiomers. So this thalidomide is a racemic mixture, and it is a equal amount of S thalidomide and R thalidomide. So S thalidomide and R thalidomide, RNS. So S and R. So S isomer is a, it is a teratogenic in nature. S isomer causes the phocomelia, right? तो क्वेश्चन एक बार आ चुका था, which isomer of thalidomide will cause phocomelia, और क्वेश्चन ऐसा भी एक बार आया था, phocomelia और phocomelia kind of teratogenic hepatitis of following drug. उसमें एक था yes thalidomide, एक था R thalidomide. Yes thalidomide will cause phocomelia, remember. R thalidomide is a safe, but no more used nowadays because lot of superior drugs are available. Lot of superior drugs are available for the treatment of morning sickness. So that's why thalidomide is no more. There are certain other drugs also. They can cause different teratogenic event. We have also, I think we have seen that. If we have not seen, we'll see it again. Don't do it. So teratos is the Greek word which means monster, and this thalidomide was a drug seen as depressant drug, was used in the morning sickness in the pregnant woman. जो प्रेग्नेंट वुमन्स होते हैं उनमें सुबह सुबह थोड़ा सा नौशिया वोमिटिंग होता है उनको, तो वो कंट्रोल करने के लिए थैलिडोमाइड नाम का ड्रग यूज किया था 19th सेंचुरी में। थैलिडोमाइड यूज करने के कारण क्या हुआ है कि जो प्रेग्नेंट वुमन्स थे उनके जो बच्चे, वो बच्चे उनको हाथ पैर ही नहीं थे, उस कंडीशन को बोलते हैं फोकोमेलिया, राइट? सो पर्टिकुलरली थैलिडोमाइड जो है दैट इज अ ड्रग विच इज मार्केटेड इन द रेसमिक मिक्सचर फॉर्म। रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, टू इनेंशियोमर ऑफ सेम ड्रग। अगर दो ड्रग का इनेंशियोमर है, जैसे L and R, R and S, D and L, R and S, S isomer, R isomer. So S isomer of thalidomide is a teratogenic, R is not. Remember. Okay. Now there are certain drugs, other drugs also. They causes the teratogenic event. We'll see it on upcoming slide.
When and what kind of teratogenic effect will be produced by drug when they are taken. So stages of pregnancy during which fetal abnormality will take place if teratogenic drug is taken. So stages during which teratogen or teratogenic drug can cause fetal abnormalities. Pregnancy के क्या होते हैं stages होते हैं different stages, right? So which stages कौन से stage में कौन सा drug क्या problem कर सकता है? So stages of drug and problem cause. Stages of drug and problem. So what are the different stages of your pregnancy? So like first 2 week of pregnancy is there. What period of pregnancy, right? Period of pregnancy. So first 2 week of pregnancy. पहले 2 हफ्ते प्रेगनेंसी में क्या होता है? 2 weeks of pregnancy is nothing but the period of fertilization and implantation. ये जो period होता है, that is a period of fertilization and implantation, right? So during this period, the fertilization of eggs and implantation of that egg is taking place, right? In that period, if any woman takes any kind of teratogenic drug, or if any physician prescribe a teratogenic drug in this period, तो प्रेगनेंसी का जो 2 week होता है, 2 हफ्ते, उस टाइम पे वो जो पीरियड होता है वो फर्टिलाइजेशन का होता है, इम्प्लांटेशन का होता है. मतलब उस टाइम पे क्या है, वो बहुत ही क्रिटिकल पीरियड होता है. उस टाइम पे जो मेल गैमेट से जो फीमेल गैमेट से और जो स्पर्म है उसका उनका यहाँ पे वो एक में के साथ होते मिलन होता है उनका. एंड आफ्टर दैट देयर इज अ फर्टिलाइजेशन. And in that period, if any woman takes or any doctor prescribe the drug, teratogenic drug, so there is a chances of miscarriage मतलब वो इम्प्लांट होगा नहीं womb में, miscarriage हो जाएगा उसका. ठीक है. Now if any woman's or if any physician prescribe drug in a pregnant woman in a 2 to 8 weeks of pregnancy, 2 से लेके 8 हफ्ते तक आप प्रेगनेंसी है किसी लेडीज को. What is that period? That period is nothing but the period of organogenesis. That period is known as a period of organogenesis. So जो pregnant woman होता है, मतलब pregnant अभी भी हुआ है, so 2 to 8 weeks जो period होता है, that is a period of organogenesis. In that period there is a different organs are formed in the fetus. 2 से लेके 8 हफ्ते तक जो पेट में बच्चा रहेगा होने वाला, उसके हाथ पैर ब्रेन जो भी स्किन वगैरह, सो दे विल बी फॉर्म्ड. सो 2 to 8 weeks period of organogenesis. So there is a formation of organs, different organs of body, liver, kidney, etc. So if there is any teratogenic drug which is taken by a pregnant woman in a 2 to 8 weeks, or if that is prescribed by patient in this period 2 to 8 weeks, what will happen? So harmful effects are nothing but the clipped plate defect, optic atrophy, mental retardation, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स. तो आपको ये टर्म समझ में आएगी, वही तो काम होता है मेरा. आई विल एक्सप्लेन दिस टर्म्स, डोंट वरी अबाउट इट. इफ एनी प्रेग्नेंट वुमन टेक्स any teratogenic drug in these 2 to 8 weeks, so the fetus may suffer from clip plate. So आपने देखा होगा, you might have seen, आपने देखा होगा कि किसी किसी के होठ जो होते हैं ऊपर वाला या नीचे वाला वो कटे हुए थे, बीच में कटा है. सो क्लिप प्लेट. देन ऑप्टिक एट्रोफी मतलब क्या है? तो ऑप्टिक मतलब क्या है? इट इज रिलेटेड टू साइट, मतलब आईज. एंड एट्रोफी मतलब क्या है? सो एट्रोफी मतलब डिस्ट्रॉय होना. सो ऑप्टिक एट्रोफी मतलब ऑप्टिक नर्व खराब होना. सो ऑब्वियसली जिसका ऑप्टिक नर्व खराब होगा वो क्या होगा? अंधा हो जाएगा. सो ऑप्टिक एट्रोफी मतलब आपने देखा है कोई कोई बच्चा जन्म से ही अंधा होता है. सो दैट इज अ काइंड ऑफ ऑप्टिक एट्रोफी. So if pregnant woman takes any teratogenic drug in this period, so the fetus may be having problem in the clip plate, optic atrophy, mental retardation. समझ में नहीं आया था उसको कुछ. Then neural tube defect. Neural tube defect means what? So whatever your spinal cord is there, आपके spinal cord जो होता है उसमें डिफेक्ट आएगा, उसको बोलते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट. उसमें 2-3 होता है, अपन देखेंगे नेक्स्ट. Now if any pregnant woman takes any teratogenic drug in a 8 weeks onward in the pregnancy, 8 हफ्ते के बाद का प्रेगनेंसी है, 8 हफ्ता है प्रेगनेंसी को हुआ है, तो उसके बाद में अगर उस लेडीज ने कोई टेराटोजेनिक ड्रग ले लिया या फिर ड्रग उसको प्रेस्क्राइब किया डॉक्टर ने, सो व्हाट विल हैपन? सो दैट पीरियड इज नोन एज अ पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. सो 8 weeks onward period of pregnancy, that is a period for growth and development. Now if in this period any woman takes teratogenic drug, so what kind of harmful effects or defects will be there?
डेवलपमेंटल एंड फंक्शनल एबनॉर्मेलिटीज, ठीक है। बच्चे का हाथ भी होगा, पैर भी होगा, सब होगा, लेकिन वो चलेगा नहीं प्रॉब्लम। डेवलपमेंटल एंड फंक्शनल एबनॉर्मेलिटीज, दिस इज द different periods of pregnancy. Significance means what is happening in that period and harmful effect produced by teratogenic drugs. So during the first 2 weeks there will be miscarriage. During the 2 to 8 weeks there will be clip plate defect, optic atrophy, mental retardation, neural tube defect. In the on the 8 weeks onward of pregnancy, so that harmful or teratogenic drug may cause developmental and functional abnormalities. What are the examples of teratogenic drugs? सो ड्रग्स प्रूवन टेराटोजेनिक इन द ह्यूमंस। तो आपको ये एग्जांपल याद ही रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते, क्वेश्चंस बहुत बार आते, ठीक है। एग्जांपल्स ऑफ ड्रग विच आर टेराटोजेनिक इन द ह्यूमंस। फर्स्ट, यहाँ पे सिंपली आपको याद रखना है कि जितने भी एंटी कैंसर ड्रग है ऑल आर टेराटोजेनिक नेचर, ऑल एंटी कैंसर ड्रग्स आर टेराटोजेनिक इन नेचर, राइट। सो फर्स्ट ड्रग मिथोट्रिक्सेट। मिथोट्रिक्सेट इज नथिंग बट द एंटी कैंसर ड्रग। मिथोट्रिक्सेट क्या है? एंटी कैंसर ड्रग है, ओके। सो what kind of teratogenic effect it produces when it is given in the pregnant woman? So if methotrexate is used in the pregnant woman, methotrexate if used in the pregnant woman, so it causes CNS and limb malformation। मतलब वो बच्चे का ब्रेन और जो उसके लिम्स है, हाथ पैर, उसका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा। So methotrexate will cause CNS and limb malformation। Now another category of drugs which causes the teratogenicity, ACE inhibitor। ACE क्या होता है? Angiotensin converting enzyme। ACE inhibitor, angiotensin converting enzyme inhibitors। So that enzyme inhibitors like enalapril, captopril, lisinopril, fosinopril, ramipril, all these drugs are used in the treatment of hypertension। ये ACE inhibitors ब्लड प्रेशर में यूज करते हैं, पीपी, ब्लड प्रेशर। They are the drug used in the blood pressure। So when they are given in the pregnant woman, what will they do? They have potential to produce prolonged use of these drugs may cause renal failure in the neonates, renal tubular dysgenesis, decrease in the skull ossification। अभी देखो, renal failure मतलब क्या? किडनी में किडनी फेल कर देगा, renal failure मतलब। prolonged use of this ACE inhibitor in the pregnant woman can cause renal failure in the neonates। बच्चे को किडनी का प्रॉब्लम हो जाएगा। renal tubular dysgenesis, रीनल मतलब किडनी, ट्यूबुलर मतलब नेफ्रॉन। किडनी का जो नेफ्रॉन है उसका डिसजेनेसिस मतलब प्रॉपरली वो बन नहीं पाएगा। सो देयर इज अ माल फॉर्मेशन ऑफ नेफ्रॉन इन द किडनी, दैट इज अ रीनल ट्यूबुलर डिसजेनेसिस। और डिक्रीज इन द स्कल ओसिफिकेशन। अभी जो आपका खोपड़ी है जिसके अंदर ब्रेन है, so in brain lies under the lies in the cranium, so whatever cranium is there, so that should be a strong। आपको जो खोपड़ी है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फॉर दैट ड्यूरिंग द ऑर्गेनोजेनेसिस देयर इज ओसिफिकेशन। ओसिफिकेशन मतलब कैल्सिफिकेशन, कैल्सिफिकेशन कैल्शियम फॉस्फेट उसमें उसमें लगाया जाता है, ठीक है। सो ओसिफिकेशन दैट विल मेक स्कल स्ट्रॉन्ग। सो इफ एनी प्रेग्नेंट वुमन टेक्स दिस ACE inhibitors for long period, that can decrease the skull ossification। मतलब स्कल जो है आपका खोपड़ी जो है वो कम मजबूत रहेगा, पूरा मजबूती के साथ नहीं रहेगा। नाउ इफ a pregnant woman takes anticholinergic drugs, so anticholinergic drugs, so they can cause neonatal meconium ileus। neonatal meconium ileus means उसका जो इंटेस्टाइन में उसमें प्रॉब्लम आ जाएगा। सो दे आर लिटिल बिट रिलैक्स। कोलिनर्जिक्स जो होते हैं, एसिटिलकोलिन का काम क्या होता है? सो इट कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स द योर GIT मसल्स, पेरिस्टालसिस। So that is the main function of polyacetylcholine। So due to prolonged use of anticholinergic drug, what will happen? So they causes the constipation, okay, causes the constipation, neonatal meconium ileus। वही बच्चों में चयापचय जो भी डाइजेशन का प्रॉब्लम हो जाएगा, उसमें उसमें पेरिस्टालसिस होगा ही नहीं, राइट। सो दैट इज द मेन neonatal meconium ileus। Now if pregnant woman takes any anti-thyroid drug, so what kind of teratogenic effects are there? So drugs and their teratogenic effect. So fetal and neonatal goiter. So goiter is a disease where there is increased thyroid hormones, hypothyroidism, aplasia cutis। So particularly with the methimazole, it is a anti-thyroid drug। Methimazole जो है, methimazole is an anti-thyroid drug, so it causes teratogenic effect। Now next drug is a carbamazepine, it is an
साइकोटिक ड्रग कार्बामेजिन, सो इट कॉजेज द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो प्रॉपरली नहीं बनेगा, न्यूरल ट्यूब। I will show you the neural tube defect in the later on in the images. Misoprostol, it is a prostaglandin analog, so it can cause Mobius sequence. I don't know what this, but Mobius sequence is the teratogenic effect. So NSAID, non-steroidal anti-inflammatory, जो भी आपके एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक ड्रग्स है या फिर आप सिंपल लैंग्वेज में पेन किलर जिसको बोलते हैं, NSAIDs, they can cause constriction of ductus arteriosus, ductus arteriosus उसका कंस्ट्रक्शन करते हैं। सो इफ दे आर टेकन इन द प्रेग्नेंट वुमन, इफ दे आर यूज्ड इन द प्रेग्नेंट वुमन, तो दे कैन कॉज, ऐसा नहीं कि सभी करते हैं, दे कैन कॉज, कुछ ड्रग कर सकते हैं। नेक्रोटाइजिंग एंडोकोलाइटिस, मतलब जो आपका इंटेस्टाइन है उसमें नेक्रोसिस कर देगा, डैमेज कर देगा, नेक्रोटाइजिंग एंडो एंटेरोकोलाइटिस। नाउ अदर ड्रग्स जैसे OHDs, oral hypoglycemic drugs, so means drugs used in the diabetes, so they can cause neonatal hypoglycemia, जो बच्चा है उसका ब्लड शुगर लेवल कम कर देंगे, ठीक है। डायबिटीज किसको है, प्रेग्नेंट मदर को, ठीक है। बट अगर एंटी डायबिटिक ड्रग्स जो है तो वो क्या करते हैं, दे कैन क्रॉस द प्लासेंटा एंड दे कैन कॉज डिक्रीज इन द ब्लड शुगर लेवल ऑफ योर फीटस। आपके पेट में जो बच्चा है उसका भी ब्लड शुगर लेवल कम करेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका ही। साइकोएक्टिव ड्रग, एंटी साइकोटिक ड्रग्स जो होते हैं, दे कैन कॉज neonatal withdrawal symptom in the EP they are used in the pregnant woman, ठीक है। तो अगर कोई आजकल की मॉडर्न मम्मी है, मॉडर्न मम्मी का क्या है, कुछ भी कर सकती है। मॉडर्न मम्मी अल्कोहल भी ड्रिंक करती है, मॉडर्न मम्मी स्मोकिंग भी करती है, मॉडर्न मम्मी मॉर्फिन भी ले सकती, कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि जेंडर इक्वलिटी है, कोई कुछ भी करेगा, कुछ कोई नहीं, कोई किसी को कुछ बोल नहीं सकता, राइट। सो psychoactive drug, if any pregnant woman are using any psychoactive drug, is cocaine for example, say for cocaine, अगर कोई लेडी कबीर सिंह है कोकेन लेती है, so what will happen, neonatal withdrawal symptoms, बच्चे मतलब क्या, वो बच्चों को भी वो ड्रग का एडिक्शन हो जाएगा, ठीक है। एंड वंस यू स्टॉप द ड्रग, बच्चों में क्या आएगा, विड्रॉल सिम्टम्स, बच्चे में आएगा विड्रॉल सिम्टम्स। अगर प्रेगनेंसी में माता जी अगर 1990 का पैक लगा रही है तो ऑब्वियसली बच्चे के ऊपर उसका असर होता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आपल्या संस्कृतीमध्ये इन आवर ट्रेडिशन, सो लेडीज डू नॉट डू दीज थिंग्स, लेडीज स्मोकिंग नहीं करती, लेडीज ड्रिंकिंग नहीं करती, लेकिन आजकल क्या है, मॉडर्नाइजेशन हो चुका है, कोई भी कुछ भी कर सकता है। नाउ नेक्स्ट ड्रग इज अ फिनेटोइन, सो फिनेटोइन इज अ ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी। ये जो फिनेटोइन होता है, इट इज ड्रग यूज्ड इन द एपिलेप्सी, सो इट कैन कॉज ग्रोथ रिटार्डेशन एंड सीनेस डिफेक्ट। If phenytoin is used in the pregnant woman, it can cause growth retardation and CNS defects. Again, next drug is nothing but the warfarin. So warfarin is an anticoagulant. We have seen about the warfarin, each and everything mechanism. Warfarin is an anticoagulant drug. So if it is used in the pregnant woman, it can cause skeletal and CNS defect. Okay, and Dandy-Walker syndrome. कौन सा Walker syndrome? Dandy-Walker syndrome. And this was question in GPAT. So what is the teratogenic effect of warfarin? So what is that? Dandy-Walker syndrome. ये देखो Dandy-Walker syndrome. So teratogenic effect of, then again valproic acid can cause neural tube defect. Neural tube defect. इसका adverse effect होता है spina bifida. Spina bifida. Okay. So जितने भी neural tube defect करने वाले drugs है, they can cause neural, मतलब spina bifida. That is one of the defect in the neural tube. So जैसे ये carbamazepine, neural tube defect. Valproic acid, neural tube. Another drug is nothing but the trimethadone. Trimethadone. So it can cause malformation of ear, clip plate defect, ureterogenital and skeletal defect, cardiac defect. Trimethadone. Thalidomide. Okay, we have seen thalidomide causes the limb shortening on internal organ defect known as a phocomelia. Cyclophosphamide. It is again an anti-cancer drug. It can cause CNS malformation and secondary cancer to the fetus. The fetus को कैंसर कर देगा। एंटी कैंसर ड्रग है, प्रेग्नेंट वुमन में किसके लिए यूज किया है, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, बट बच्चे को ब्रेन क्या है, ब्रेन प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होने देगा, एंड इट कैन कॉज सेकेंडरी कैंसर इन द चिल्ड्रन, इट कैन कॉज सेकेंडरी कैंसर इन द नियोनेट्स। दैट इज द एडवर्स, दैट इज द टेराटोजेनिक इफेक्ट, राइट। नाउ अगेन लिथियम कार्बोनेट, ये जो लिथियम होता है, लिथियम कार्बोनेट, कोई लिथियम कार्बोनेट, दिस ड्रग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेनिया, हाइपोमेनिया, साइकोसिस, सो इट कैन कॉज एप्स्टाइन एनोमली। Then most of the hormonal drugs, जितने भी हार्मोन्स थे, like testosterone, estradiol, then
progestins is okay, so they can cause again teratogenic effect. Okay, so diethyl stilbestrol, so it is a drug, hormonal drug, diethyl stilbestrol. So it can cause vaginal carcinoma and other genitourinary defects in the female male offspring. अगर बच्चा है पेट में, फीमेल मतलब जो लड़की अगर है छोटी, उसका कार्सिनोमा करेगा ये इंटरनल ऑर्गन्स, ये जेनेटोयूरिनरी डिफेक्ट्स इन द फीमेल एंड मेल ऑफस्प्रिंग. डायनाजोल एंड अदर एंटी एंड्रोजेनिक ड्रग, अगेन ये क्या है, हार्मोनल एंटागोनिस्ट है डायनाजोल. इट कैन कॉज मस्कुलाइजेशन ऑफ फीमेल fetus. डायनाजोल अगर एंटी एंड्रोजेनिक ड्रग है, दैट इज यूज्ड इन द यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ पोस्ट मेनोपॉजल प्रॉब्लम्स. जो लेडीज होते हैं 35-40 ईयर्स के बाद में उनका मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाता है, बाद में उनके हार्मोनल चेंज होते हैं और उनका बहुत सारा प्रॉब्लम होता है. सो डायनाजोल इज अ टेस्टोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, एंड्रोजेनिक एंटी एंड्रोजेनिक ड्रग. सो व्हेन इट इज यूज्ड इन द प्रेग्नेंट वुमन, यू वांट इट कैन कॉज मस्कुलाइजेशन ऑफ फीमेल पेट्स, मतलब जो फीमेल बच्चा है, जो लड़की है पेट में, वो थोड़ा सा लड़की जैसे बिहेव करेगी. मस्कुलाइजेशन मींस impartation of male characters in the female. Now synthetic retinoids and isotretinoin drug, मतलब सिंथेटिक जो रेटिनॉइड्स है, विटामिन ए की जो सिंथेटिक फॉर्म है, दे कैन कॉज क्रेनियोफेशियल कार्डियोवास्कुलर एंड सीनस डिफेक्ट. टेट्रासाइक्लिन्स, दे आर द काइंड ऑफ एंटीबायोटिक. टेट्रासाइक्लिन्स का है एंटीबायोटिक है, एंड दे कैन कॉज टीथ एंड अदर बोन abnormality. तो टेट्रासाइक्लिन्स क्या है, टेट्रासाइक्लिन्स दे आर नथिंग बट द एंटीबायोटिक. ये क्या करते हैं, दे बाइंड्स विद द कैल्शियम, प्रिवेंट द कैल्सिफिकेशन ऑफ योर टीथ एंड बोन्स. आपके बोन में कैल्शियम कैल्सिफिकेशन, जो कैल्शियम होना चाहिए, कैल्सिफिकेशन मतलब impartation of calcium ions in the bone, it will be prevented by the tetracyclines, right? So these are the drugs, okay, these are the examples of drug which can cause teratogenicity. These are the teratogenic effects. Again, these are the examples of teratogenic drug. These are the teratogenic effects. इसमें से important कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं. What are the important from this drug? So you have to remember this carbamazepine. It causes the neural tube defect. You have to remember this valproic acid. It can cause the neural tube defect. You have to remember this warfarin, Tandy Walker syndrome. You have to remember. Okay. Again, anti-thyroid drugs. इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ चुका है, मेथिमेजोल के ऊपर. It can cause teratogenic effect. This phenytoin can cause growth retardation. Again, neural tube defect. Carbamazepine, phenytoin, valproic acid, all can cause neural tube defect. Then again you have to remember about thalidomide, pocomelia. Then lithium, you have to remember this Epstein anomaly. Okay, and this anti-androgenic drug, they can cause masculization of fetus. Then all the other steroids, they are also teratogenic in nature. Tetracycline का आपको easily याद रहेगा, बाद में भी आएगा ये. So they can cause bone and teeth abnormalities. So these are the nothing but the different drugs which can cause teratogenic effect in the pregnant woman. Now examples of drug which causes teratogenic effect, you can see over here. So पहला है आपका thalidomide, tetracycline, sodium valproate, phenytoin, carbamazepine, phenobarbital, lithium, glucocorticoids, androgens, estrogens, progestins, antithyroid drug and anti-cancer drug. Anti-cancer drugs. So these are the categories of drug that can cause teratogenic effect. ते भूलना नहीं है आपको. ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, one of the following drugs is not a teratogenic in nature. You have to remember. Thalidomide बहुत पुराना है, उसका एग्जांपल है. टेट्रासाइक्लिन्स, सोडियम वैल्प्रोएट, phenytoin, carbamazepine, ठीक है, phenobarbital, lithium. ठीक है, अभी देखो ये जो जितने भी ड्रग्स हैं, फ्रॉम दिस सोडियम वैल्प्रोएट टू लिथियम, okay, sodium valproate, phenytoin, carbamazepine, phenobarbital and lithium, all these drugs, they are acting on brain, so they are seen as depressant. So lithium is antipsychotic, phenobarbital is a antihypnotic, carbamazepine is antipsychotic, anti-epileptic, both are anti. Most of the anti-epileptic and seen as depressant drugs, they have a again teratogenic effect. तो इसमें आपको ऐसे लगो कि कोई teratogenic effect किसको है, मोस्टली ये older drugs and all the steroids, they might be synthetic steroids or natural. So androgen, estrogen, progestin and corticosteroids. Androgen, estrogen and progestin and corticosteroids. ये हो गए steroids, ये हो गए seen as depressant, ये हो गए steroids. And then
anti-thyroid and anti-cancer. All anti-cancer drugs they are teratogenic in nature. Anti-thyroid, anti-cancer. ये तो पहला एग्जांपल तो आपको याद ही रहेगा, टेट्रासाइक्लिन का भी याद रहेगा. So how you can remember this? So most of the CNS depressant drugs, most of the steroidal drugs they are teratogenic in nature. Anti-cancer drugs they are teratogenic in nature. You can see different examples of prodrugs. Prodrugs क्या होते हैं? Prodrugs they are the drugs which are inactive themselves. Prodrugs क्या होते हैं? They are inactive outside, but when they are taken, when they will go inside the body, they are metabolized in the body and they are converted into active metabolite. Now that active metabolite will exert the pharmacological action. कितने examples है prodrugs? For example, drug and their active. So levodopa is converted into dopamine. Prednisolone is converted into prednisolone. Prednisone is converted into prednisolone. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. What is the active metabolite of prednisone? Prednisone का active metabolite होता है prednisolone. इनएप्रिल का होता है इनएप्रिलेट. Bicampicillin, ये bicampicillin is a penicillin derivative. Bicampicillin, tivampicillin, pivampicillin and amoxicillin. Amoxicillin देखो amoxicillin A, okay? Then bicampicillin B, pivampicillin P and telampicillin T. So all these are the known as aminopenicillins. ये क्या है aminopenicillins? When we will see the penicillin that you will come to know. All these are the prodrugs. तो amoxicillin का amoxicillin, bicampicillin, pivampicillin, telampicillin, all these are converted into ampicillin in the body. In cortisone का active metabolite होता है hydrocortisone. Azathioprine का होता है azathioprine का होता है marcapapirin. Cyclophosphamide का होता है aldophosphamide. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. So what is the active metabolite of cyclophosphamide? Cyclophosphamide is an anti-cancer drug and active metabolite is aldophosphamide. Then zidovudine is converted into zidovudine triphosphate derivative. So all these are the examples of prodrugs. Okay? Prodrugs. There are a lot of prodrugs. And I certain drugs which are example of drugs having examples of drug having longest half-life. जिनका टी आप बहुत ज्यादा होता है. So longest टी आप किससे होता है? You can remember this. Chloroquine has a longest टी आप 10 to 24 hours. Then Enteracept 3 to 4 hours. Phenylbutazone 3 to 4 hours. Mifloquine 16 to 24 hours. Then gold salt. Gold salts they are used in the treatment of arthritis. Examples of drug which are having low therapeutic index. मतलब जिसका therapeutic index low है, so safety of margin will also be low. So example of drug with low safety of margin ये याद रखो. Digoxin, lithium, theophylline and quinidine. इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि one of the following drug is having narrow therapeutic index. Wide therapeutic index मतलब क्या है? So wide therapeutic index means they are having larger safety of margin. Narrow therapeutic index means low safety of margin. Examples of narrow therapeutic index was digoxin, lithium, theophylline and quinidine. ये याद रखना. Teratogenic drug जो है वो आपने देखा है. Drug which need tapering for long term use. मतलब ये long term use किया ना तो धीरे धीरे डोज कम करना पड़ता है. अचानक आप डोज नहीं कम कर सकते. That can result in the withdrawal symptom or that can result in the next we'll see drugs which are not recommended or contraindicated in case of breastfeeding and lactating women. जो लेडीज अभी जिनका डिलीवरी हो चुका है, जो बच्चे को दूध पिलाती है अपने, so drugs which are not recommended in the lactating mother, so those, or you can see suckling infants, so drugs which are not recommended or they are contraindicated in case of breastfeeding or lactating woman or suckling infants. So these drugs if they are used they can have adverse effect on the suckling infants. ठीक है, मतलब जो बच्चे दूध पीते हैं उनमें adverse effect हो जाएगा. Suppose antibacterial drugs like these sulfonamides, tetracyclines, chloramphenicol, nalidixic acid, isoniazid, erythromycin. So if these drugs they are used in the lactating mother or breastfeeding women, so what can they will adversely affect the suckling infants. जो बच्चा दूध पी रहा है उसको adversely affect करते हैं. इसका आइडिया रखो. Sulfonamides, tetracyclines, chloramphenicol, nalidixic acid, isoniazid and erythromycin. Now again certain analgesics like indomethacin, phenylbutazone, aspirin, opioids they are also contraindicated in case of breastfeeding women. Antipsychotic drugs like diazepam, lithium carbonate they are also contraindicated in the the lactating
Antihypertensive like clonidine and reserpine's. They are also antihypertensive means drug used in the treatment of blood pressure, and psychoactive means drug which are used in the treatment of psychotic disease. Analgesic मतलब painkillers. Antibacterial मतलब antibiotics. Antithyroid drugs like thiazole, methimazole, carbimazole, radioiodine, they are also contraindicated or not used in the breastfeeding or lactating. Again, anti-neoplastic मतलब anti-cancer drugs. Okay, like amantadine, cimetidine. Okay, cimetidine is nothing but the drug used in the treatment of ulcer. No more used nowadays. Amantadine is antiviral drug. Anthraquinones, they are a purgative laxative. Amiodarone is a drug used in the treatment of blood pressure. Epinephrine, aminophylline is used in the treatment of bronchial asthma. Ergotamine, vitamin D. So all these drugs are contraindicated. They are no more used in the lactating mothers or breastfeeding mothers. Now, if you got a toxicity of drug, आपको अगर toxicity हो गया या फिर poisoning हो गया, so if you got poisoning and if you don't know about the poison, अगर आपको एक मिनट, if you don't know about the poison, then what? So if you don't know the nature of poison, then you have to use universal antidote. Universal antidote रहेगा. So what is the composition of universal antidote? So two parts of activated charcoal. ये composition पूछा है एक बार GPAT में. Two parts of powdered charcoal or activated charcoal. Charcoal मतलब कोलसा. Activated charcoal. Two parts of activated charcoal. One part of tannic acid and one part of magnesium oxide. One part of magnesium. So remember the composition of your universal antidote. So if nature of poison is unknown, आपको कौन सा poison खा लिया आपने मालूम नहीं, प्यार में धोखा खाया आपने, poison खा लिया, मैं उसके बिना जी नहीं सकता, मर जा, मर गया बेटा. And universal antidote, what is that? So two parts of powdered charcoal, one part of tannic acid and one part of magnesium oxide. So what is the role of your charcoal? Charcoal क्या करेगा? It has a physical action. So it will absorb unabsorbed poison from the stomach. आपने क्या किया? Poison खा लिया, ठीक है? उसमें का कुछ poison आपके blood में गया absorb होके, कुछ poison stomach में ही है. तो डॉक्टर क्या करेगा आपको? उसको मालूम नहीं poison हो सकता, universal antidote देगा. उसमें होता है activated charcoal, वो जाएगा आपके पेट में. तो activated charcoal will adsorb by physical action remaining poison in the stomach. तो वो poison adsorb कर लेगा. Now what is the role of tannic acid? So पुराने जमाने में क्या था कि poison कौन सा था, लोग कुछ भी खाते हैं, मतलब रान भाजा वगैरह. So they don't know what is a useful plant, what is a useless plant. So suppose if anybody eats dhatura seeds, what will happen? Poisoning. So dhatura में होता है alkaloids, particularly कौन सा alkaloids? Tropin alkaloids. So this tannic acid is nothing but the acid which precipitate the alkaloids. तो alkaloid का टेस्ट भी होता है, tannic acid test. So alkaloid will be precipitated by tannic acid. Now what is the role of magnesium oxide? It will stimulate the peristalsis and it will evacuate the remaining poison. ये क्या करेगा? आपको डायरिया कर देगा. डायरिया होने के बाद में क्या है कि फटाफट आपका अंदर का कचरा बाहर. Now tannic acid precipitate the alkaloid, therefore it is used in the alkaloidal poisoning. So it is a universal antidote obviously. बाकी specific antidote क्या होते हैं? So particular drug का poisoning हुआ है तो specific antidote available. Nature of poison is unknown, so you can use universal antidote. Now poisoning may be because of the different reason. Poisoning के पीछे बहुत सारे reason होते हैं. फर्स्ट होता है suicidal intent. Suicidal intent उसके ऊपर मैं आपको at the end of this session एक दूसरा slide दिखा. What are the reasons of poisoning? Another term is their drug tolerance. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं. Drug tolerance. What do you mean by drug tolerance? If large dose of drug is required to elicit or to produce a pharmacological effect which is produced by normal therapeutic dose of drug. कि जैसे होता है 500 मिलीग्राम पैरास्टामोल is able to decrease your temperature. टेम्परेचर हो गया, आपको फीवर आ गया, 500 मिलीग्राम का पैरास्टामोल का टैबलेट दे दिया, वो क्या करेगा? फीवर डिक्रीज कर देगा. बट किसी किसी पेशेंट में क्या होता है कि 500 मिलीग्राम पैरास्टामोल काम ही नहीं करता, उनको लगता है 1 ग्राम पैरास्टामोल. That is nothing but the tolerance. If you are tolerant, so you will require a larger dose of drug to elicit a particular pharmacological response. For example, जैसे होता है कि किसी किसी को
अल्कोहल ड्रिंकिंग की हैबिट होती है, तो बेवड़े होते हैं, ठीक है। बेवड़े वालों को कैसा है कि उनको बहुत ज्यादा अल्कोहल बॉडी में होता है, तो उनका जो बॉडी का सिस्टम है अल्कोहल के मेटाबॉलिज्म का वो फास्ट हो जाता है, और वो उनकी बॉडी अडेप्ट कर चुकी है वो कंडीशन को, उनमें अल्कोहल का ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। जो रूटीनली बेवड़ा आदमी है उसको अगर आपने जाके बोला कि सर ये 30 ml अल्कोहल है आप ले लो, उसको क्या फर्क पड़ने वाला है, उसको 30 ने वो पूरा खमा मार सकता है ना, क्योंकि वो उसका काम ही डेली हुई है, ठीक है। बट एक नॉर्मल आदमी जो आदमी किसी ने कभी अल्कोहल लिया नहीं, उसके पास जाओ उसको बोल 30 मिले, अगर उसने ले लिया तो उसको क्या होगा, उसको वो नशा हो जाएगा, ठीक है। सो इफ लार्जर डोज ऑफ ड्रग इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट which is produced by normal therapeutic dose of drug known as a tolerance. For example, और एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, those who are habitual to alcohol, अल्कोहल को जिसका हैबिट है, अगर वो पेशेंट अगर उसका कोई ऑपरेशन करना है तो उसको ऑपरेशन टेबल में जाने से पहले डॉक्टर पूछेगा आपको कि इसको अल्कोहल की आदत है या सिगरेट स्मोक करता है, क्यों? बिकॉज if the patient is having alcohol addiction, what will happen? So if doctor is using any anesthetic agent which is related to alcohol like ether, trichloroethanol or chloroform, so what will happen? Because of his addiction उसका ब्रेन जो है वो दैट इज यूज टू दैट डिप्रेशन, उसमें लार्जर डोज लगेगा टू एडजस्ट द डोज, ओके। So that is known as drug tolerance. So if larger dose of drug is required to produce a certain pharmacological effect, which is normally produced by normal dose or normal therapeutic dose, known as a tolerance. ठीक है, tolerance, known as a tolerance. Now tolerance may be either natural tolerance or acquired tolerance. Tolerance कितने टाइप होता है? Natural tolerance or acquired tolerance. Natural tolerance means what? So if you are tolerant to particular drug naturally by birth, known as a natural tolerance. So if you are tolerant to certain things, होता है ना कि मैंने ऐसे एक दो एग्जांपल देखे कि जिनको करंट नहीं लगता, तब खुली जो बिजली की तार है उसको पकड़ते हो उसको करंट नहीं लगता, तो नेचुरली उनमें वो होगा, सो दैट इज अ नेचुरल टॉलरेंस टू दैट, ओके। Another is acquired tolerance. Acquired tolerance is because of the repeated use of drugs. Okay. जैसे अल्कोहल का है, repeated drinking of alcohol causes the alcohol tolerance. Repeated use of certain drugs also causes the acquired tolerance. Now that is the tolerance. If larger dose of drug is required to produce a particular pharmacological effect, which is normally produced by therapeutic dose of drug, that is known as a tolerance. They are of different type. First one is a species tolerance. Species tolerance. Species tolerance. Okay, for example, some rabbits. रैबिट में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज होता है, ब्लैक रैबिट, ठीक है, जो रानटी खेत में पाए जाने वाले खरगोश होते हैं वो रानटी रैबिट्स, या फिर एक्सपेरिमेंट के लिए रैबिट यूज करते हैं, उनको बोलते हैं अल्बिनो रैबिट्स. सो सम रैबिट्स दे कैन टॉलरेट लार्ज क्वांटिटी ऑफ बेलेडोना. खरगोश की एक प्रजाति होती है जो जिनको बेलेडोना का ज्यादा डोज लगता है और बाकी खरगोश को कम लगता है एक पर्टिकुलर इफेक्ट करने के लिए. फॉर एग्जांपल, what is the use of that belladonna? Belladonna is nothing but the having atropine, okay. So atropine when it is a instilled into eyes, जब खरगोश के आंख में इसका एक आई ड्रॉप डालेंगे बेलेडोना का या फिर atropine का, so उसमें क्या होगा, pupil dilation, उसका आंख बड़ा हो जाएगा, राइट. बट सम रेसेस और सम स्पेसीज ऑफ रैबिट दे हैव टॉलरेंस टू द बेलेडोना. कुछ कुछ रैबिट्स में ही ज्यादा माइड्रियासिस हो जाएगा, मतलब आग बड़ा हो जाएगा उसका, कुछ रैबिट्स में कम हो जाएगा, मतलब होता नहीं था. स्पेसीज टॉलरेंस मींस सम स्पेसीज ऑफ रैबिट कैन टॉलरेट लार्ज क्वांटिटी ऑफ बेलेडोना because of the presence of one enzyme known as atropine esterase. Okay, so that is known as a species tolerance. इससे होता है. अफ्रीका में कौन से लोग होते हैं, ब्लैक, जो ब्लैक पीपल होते हैं अफ्रीका में. सो मोस्ट ऑफ द पीपल फ्रॉम अफ्रीका दे आर नेचुरली टॉलरेंट टू द एट्रोपिन. आपको अगर डालेंगे आपके आईज में तो आपका माइड्रेसिस हो जाएगा, बड़ा आई हो जाएगा. बट मोस्ट ऑफ द ब्लैक पीपल्स दे आर टॉलरेंट. दैट इज नॉट स्पेसिस टॉलरेंट कि ब्लैक का ह्यूमन में बहुत सारे स्पेसिस है, बहुत सारे रेसेस है, तो स्पेसिस टॉलरेंट. नाउ नेक्स्ट वन इज द रेशियल टॉलरेंस. दिस वाज क्वेश्चन इन जीपैट 2019. रेशियल टॉलरेंस, ठीक है. सो एट्रोपिन व्हेन इंस्टॉल्ड इनटू द conjunctival sac of this Caucasian people will produce a mydriasis.
रेशियल टॉलरेंस. When atropine is instilled, मतलब एक ड्रॉप डाल दिया आँख में, इन द कंजक्टिवल सेक ऑफ कॉकेशियन पीपल होते हैं, उनमें अगर एट्रोपिन का ड्रॉप डाल दिया उसके आंखों में, देर इज अ डायलेशन ऑफ पिपिल, सो उनका आंख बड़ा हो जाएगा. पिपिल डायलेशन by atropine in the Caucasian, okay, process the dilation of pupil, but same dose of, okay, atropine will not produce any dilation at all in the negroes. negroes होते, negroes में वो माइड्रेसिस नहीं करेगा. तो एट्रोपिन का काम है कि आंख का बड़ा कर देना, माइड्रेसिस करना. सो एट्रोपिन व्हेन it is installed as a drop in the Caucasian people eyes, they will produce pupil dilation, but Negroes will not be having dilation at all. Negroes, they are tolerant to the atropine, so that is known as a racial tolerance. Caucasian क्या है? It is one of the race of human. Asian क्या है? Asian, it is one of the race of human. American क्या है? It is one of the race of human. Negroes क्या है? It is one of the race of human. So if there is a difference, in the pharmacological action in the two race, that is known as the racial tolerance. Racial tolerance. स्पेसिस टॉलरेंस मतलब क्या? रैबिट के स्पेसिस मतलब क्या है? जैसे एनिमल स्पेसिस, अपन भी क्या है? एक एनिमल है. तो रैबिट्स कैन टॉलरेट लार्ज अमाउंट ऑफ बेलेडोना, बट ह्यूमंस कैन नॉट टॉलरेट. सो दैट इज अ स्पेसिस टॉलरेंस. रेशियल टॉलरेंस मतलब क्या? दो ह्यूमंस का रेस है, मतलब एक इंडियन है, एक अमेरिकन है, तो एक को ज्यादा डोज लग रहा है, दैट इज नथिंग बट द रेशियल टॉलरेंस. सो व्हाट इज द रेशियल टॉलरेंस? एग्जांपल, एट्रोपिन व्हेन इट इज instilled into the eye of Caucasians people, they produce the dilation of, but Negroes will not have any dilation. That is a racial tolerance. ऐसा ही as it is question था GPAT 2019 में. Now cross tolerance. So tolerance to one group of drug, there is a tolerance to one group of drug. The patient may have tolerance to the another group of drug which is similar. So जैसे होता है tolerance between alcohol and general anesthetics. So if you are alcohol tolerant, so general anesthetic ether will not produce you anesthesia in a smaller doses, because ether and alcohol they having chemical structure similar. अगर अल्कोहल अगर आप ज़्यादा लेते हो तो ईथर का डोज आपको ज़्यादा लगेगा इंडक्शन का एनेस्थीसिया के लिए. सो OH, ठीक है, अल्कोहल. ईथर में भी क्या होता है? अल्कोहल होता है, इथाइल मिथाइल. दैट इज नोन एज अ क्रॉस टॉलरेंस. टॉलरेंस टू ए वन ग्रुप ऑफ ड्रग्स में the patient may be having tolerance to same category from other class. जैसे होता है penicillins. So if you are if you are not sensitive to the penicillins, there are chances that you may not be sensitive to the cephalosporins. क्योंकि क्या है, पेनिसिलिन भी क्या है? बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक. ये दोनों भी क्या है? बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक. So if you are resistant to the penicillins, that means you might be resistant to the cephalosporin. So like what, that is known as a cross tolerance. Okay, so if you are tolerant to one group of drug, then there are chances that you may tolerant to similar group of another drugs. जैसे ईथर एंड अल्कोहल का टॉलरेंस जो है, that is a cross tolerance. Tolerance to the antibiotics like penicillins and cephalosporin, I have told you this thing. So if you are resistant to the penicillin, that means there are a lot of chances that you might be resistant to the cephalosporin. That is known as a cross tolerance. तो देखो टॉलरेंस क्या होता है? if larger dose of drug is required to produce the same pharmacological effect which is produced by normal dose of drug, right? That is a tolerance. Now species tolerance क्या है? if two animals will have different action to a same drug, दो एनिमल से, जैसे ह्यूमन से या फिर डॉग, you can take a dog and rabbit. So rabbits are more tolerant to the belladonna, dogs are less tolerant. So that is a species tolerance. रेशियल टॉलरेंस मतलब क्या है कि डॉग के ही अंदर, डॉग में भी क्या है? बहुत सारे टाइप होते हैं, कि देसी डॉग होता है, या फिर आपका लैब्राडोर होता है, या फिर आपका बुलडॉग होता है, या फिर आपका पप होता है ना. सो लाइक दैट. सो all species of drug, all race of dog will not have a similar reaction to the same drug. So atropine when installed into the eyes of Caucasian people will produce dilation, but Negroes will not produce dilation. That is a racial tolerance. Cross tolerance means if you are tolerant to one category of drug, you may have tolerance to the another category of like alcohol. If you are tolerant to alcohol,
If you are tolerant to alcohol, then you may have tolerance to. If you are tolerant to penicillins, or if you are resistant to penicillins, you may have resistance to cephalosporin. That is a cross tolerance. Now, this tolerance normally takes time to develop. अभी ये जो tolerance होता है, drug tolerance, it is not developed suddenly. Suddenly develop नहीं होता, it takes times. जैसे होता है ना कि आप अगर गए आपके दोस्तों के साथ, दोस्तों की पार्टी है, चलो जाओ, दोस्त ने क्या किया फिर, अरे चलना कुछ नहीं होता ले ले, चलना कुछ नहीं होता ले ले, दिया आपको एक 30 ml का पैक, आपने पिया वो 30 ml, आपको फर्स्ट टाइम क्या हुआ, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा फर्स्ट टाइम चढ़ गया हो, लेकिन आप दूसरे बार फिर से एक बार पार्टी को गए, अगर उसने 30 ml दिया आपको तो आपको कुछ नहीं होता, आप बोलते हो थोड़ा और दे, 60 ml लेते, अगर फिर से दूसरी बार तीसरी बार पार्टी को गए तो 60 की बजाय 90 ml लेते, दैट इज अ टॉलरेंस, इट टेक्स टाइम, आप 4-5 महीने लग जाएंगे आपको, आप जब टॉलरेंट बनेंगे अल्कोहल को. सो इफ यू आर ड्रिंकिंग अल्कोहल continuously for 2-3 months, then we become tolerant, right? So it will take a time to develop a tolerance, but there are certain drugs to which you can develop tolerance in a single dose, that is known as a tachyphylaxis. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. Certain drugs develops a tolerance within a few minutes. On the other hand, tolerance takes time to develop. Normally tolerance takes time to develop, but there are certain drugs which can develop a rapid tolerance. There are certain drugs which can develop a tolerance within a few minutes. कुछ मिनट में आपको टॉलरेंस हो जाएगा. फॉर एग्जांपल इपेड्रिन, एग्जांपल याद रखो, इपेड्रिन इज द ड्रग व्हिच कैन डेवलप रैपिड टॉलरेंस. क्वेश्चन आ चुका है, रैपिड टॉलरेंस, और इट इज नोन एज अ टैकीपाइलेक्सिस. यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने, लेकिन रैपिड टॉलरेंस इज आल्सो नोन एज अ टैकीपाइलेक्सिस. Tachyphylaxis is known as a rapid tolerance. Okay, an example of drug is nothing but the ephedrine. So ephedrine in a 1 or 2 dose can develop a tolerance. मतलब पहली बार ephedrine आपको दे दिया 5 mg, आपको डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट मिल गया, बट नेक्स्ट टाइम क्या होगा, 5 mg से आपको डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट मिलेगा ही नहीं, आपको लगेगा 10 mg. So that means there is a rapid tolerance, there is a quick tolerance, there is a tolerance within a few minutes. That is known as tachyphylaxis. Certain drugs develop a tolerance within a few minutes. On the other hand, normally tolerance takes time to develop. Such drugs, for example, ephedrine, then tyramine, amphetamine, then 5-hydroxytryptamine, they show the tachyphylaxis. It is also known as a acute tolerance. It is also known as a acute tolerance. क्या बोलते हैं इसको, रैपिड टॉलरेंस और एक्यूट टॉलरेंस. रैपिड टॉलरेंस और एक्यूट टॉलरेंस और टैकीपाइलेक्सिस. दिस वाज अगेन अ क्वेश्चन इन जीपीएट. तो देखो, टॉलरेंस के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, रेशियल टॉलरेंस के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, क्रॉस टॉलरेंस के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, टैकीपाइलेक्सिस क्या होता है उसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, यूनिवर्सल एंटीडोट का कंपोनेंट क्या होता है उसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. So very very important. Now, what do you mean by additive effect? What do you mean by synergistic effect? Okay, so additive effect when two drugs are given together. आपने देखा होगा कुछ कुछ टैबलेट में क्या होता है, 2 ड्रग होते हैं, एसिक्लोफेनेक एंड पैरास्टामोल. एसिक्लोफेनेक 50 मिलीग्राम, पैरास्टामोल 500 मिलीग्राम. ठीक है, ऐसा कॉम्बिनेशन देखा होगा आपने, देखा होगा जैसे फ्लेक्सोन टैबलेट आता है, या फिर आपका फ्लेक्सोन टैबलेट में क्या होता है, आइबुप्रोफेन प्लस पैरास्टामोल. देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ड्रग. व्हाई दे आर combined together, like levodopa carbidopa, that is given together by in a combined tablet. Why? Okay, so there are reasons. There is either additive effect or either synergistic effect. So what do you mean by additive effect? When total pharmacological response or total pharmacological action of 2 drugs, 2 or more drugs administered together is equivalent to their sum of the individual pharmacological response. मतलब क्या, अगर 2 ड्रग का कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हो आप, क्यों यूज कर रहे हो, सो टोटल फार्माकोलॉजिकल एक्शन of these 2 or more drugs when they are given together is the total summation of their response. मतलब एक ड्रग का अगर एक फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, उसका रेटिंग दे दो आप 1, दूसरी ड्रग का भी 1 है, उसको भी रेटिंग दे दो 1. So if they are combined together, 1 plus 1 will become 2. So that is known as a summation or additive effect. Okay, so addition of individual effect of 2 drugs known as additive effect when they are combined together, that is additive effect. So when total pharmacological action of 2 or more drugs administered together is equivalent
to the sum of their individual pharmacological action known as additive effect or summation. ओके, तो एडिटिव इफेक्ट में क्या है कि दो ड्रग दे रहे हो आप, पैरासिटामोल का 500 मिलीग्राम में एंटीबायोटिक इफेक्ट है, ठीक है, उसको आप बोलेंगे एक इफेक्ट। आइबुप्रोफेन का 100 मिलीग्राम में एंटीबायोटिक इफेक्ट है, उसको बोलेंगे एक इफेक्ट। तो आइबुप्रोफेन एंड पैरासिटामोल दोनों को कंबाइन करके बोलेंगे, so that combination is known as additive effect or that combination is known as summation. So when the pharmacological action of two or more drugs administered together, that effect is equivalent to the sum of individual pharmacological effect, that is known as a summation or additive effect. So 1 plus 1 is equal to 2. Now what do you mean by synergistic effect? So example of this additive effect is nothing but paracetamol and aspirin for pain. Paracetamol aspirin के साथ में combine किया है, that will give you additive effect. Paracetamol अगर ibuprofen के साथ में combine किया, that will give you additive effect. Paracetamol अगर diclofenac के साथ में combine किया, that will give you additive effect. Okay, so I have told you 3 examples. There is only one. Now what is another effect? Synergistic effect. So synergistic effect. Okay, so it is a facilitation of pharmacological response. What is that? Facilitation of pharmacological response of one drug by another drug when these two drugs are given together, known as a synergistic effect. So for example, normally मान लीजिए जैसे आपका एक होता है लिवोडोपा एंड कार्बिडोपा, लिवोडोपा एंड कार्बिडोपा एंड कार्बिडोपा, लिवोडोपा कार्बिडोपा, और there are certain examples of antibiotics also. They exert synergistic effect. मतलब क्या कि एक ड्रग का कितना इफेक्ट है, मान लीजिए एक पर्टिकुलर ड्रग है उसका इफेक्ट है 2, दूसरा एक पर्टिकुलर ड्रग है उसका इफेक्ट है 2। अगर वो दोनों सेपरेट सेपरेट यूज करेंगे, इसका ए ड्रग का 2 इफेक्ट मिलेगा, बी ड्रग का 2 इफेक्ट मिलेगा, when they are combined together, so they gives effect 5, so more than the summation of their individual effect. When 2 or more drugs they are combined together and their total effect is the more than that of the sum of individual effects, then it is known as synergistic effect. Or you can say there is a facilitation of pharmacological response due to combined use of drugs. Total effect is more than the addition of individual effects, known as a synergistic effect. For example, codeine and aspirin. Codeine and aspirin. Codeine क्या है? It is a centrally analgesic drug or it is a narcotic analgesic drug. Aspirin is a normal NSAID, non-steroidal anti-inflammatory. But when codeine has its own analgesic effect, say for example, rating दे दो इसको 2, aspirin when used alone, एक तो कोडिन एक दे दिया आपने अलग से, तो उसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट मिलेगा आपको मान लीजिए 2, एस्पिरिन अलग देंगे तो उसका मिलेगा फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट 2। अगर वो दोनों साथ में देंगे, कोडिन एंड एस्पिरिन कॉम्बिनेशन ऑफ टेबलेट, नॉर्मली इनका एडिशन कितना होना चाहिए? होना चाहिए 4। ओके, होना चाहिए 4। नाउ इफ 2 plus 2 addition of two individual effect of two drugs, if that is 4, known as a summation or known as a additive effect. But now if 2 plus 2 2 plus 2 if it comes 5, then it is known as a synergistic effect. It is known as synergistic effect. When two drugs are combined together, the total pharmacological response because of the combination of two drugs is more than the addition of total individual effect. मतलब क्या? जैसे मान लीजिए कोडिन देता है आपको एक इफेक्ट, एस्पिरिन देता है आपको एक इफेक्ट, ठीक है, अलग अलग अगर यूज करेंगे, बट अगर कंबाइन में यूज करेंगे, अगर इन्होंने क्या किया 1 plus 1 is equal to 2 हो गया 2, that is known as a summation or additive effect. But 1 plus 1 is equal to 3, आप बोलेंगे 3 कैसे होगा? तो if total pharmacological effect produced by combination of two drugs is more than the addition of individual effect, that is known as a synergistic effect. Are you getting or not? समझ रहे हैं? So total pharmacological response when two or more drugs they are combined together, if it is more than the summation of individual effect, more than summation of individual effect, that is known as a synergistic effect. If it is equal to the summation, known as additive effect. We'll see the next point. Okay, so as I told you in a very first session of previous slide, so universal antidote that is used when you don't know about the poison. अगर आपको poison के बारे में मालूम नहीं है, so universal antidote is used. But if you know the poison, then there is a particular type of antidote. Okay, so poison and antidote or drug poisoning
एड एंटीडोट. दिस पार्ट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन आता है इसके ऊपर. फर्स्ट, पैरास्टामोल पॉइजनिंग. So if there is a overdose of paracetamol, or if you are having paracetamol poisoning, if you ingest paracetamol by accidentally, or by intentionally, or by suicidal tendency. तो poisoning क्यों होता है? Poisoning is because of three reasons. First reason is nothing but the accidental poisoning. आपको मालूम नहीं वो चीज में क्या है, आपको रखा है श्रीखंड खाने के लिए, लेकिन आपका दुश्मन आ गया, उसमें उसने जहर मिला दिया, आपको मालूम ही नहीं, तो आपने खा लिया वो. दैट इज अ एक्सीडेंटल पॉइजनिंग. सुसाइडल पॉइजनिंग, आपको अगर मरना ही है, पागल हो गए, किसी के पैर में धोखा दिया उसने, आपको क्या है, मरना है, सो आपने क्या किया, जहर खा लिया. दैट इज अ सुसाइडल पॉइजनिंग. So if you got a poison by accident, known as accidental poisoning. If you poison yourself, that is known as suicidal poisoning or intentional poisoning. And another kind of poisoning is there, homicidal poisoning. Homicidal poisoning मतलब क्या है कि आपको पकड़ के रखा है चेयर पे आपके दुश्मन ने, और आपके मुंह में जहर डाल दिया. दैट इज नोन एज होमिसाइडल. मर्डर के लिए, मर्डर करने के लिए उसने दे दिया, दैट इज होमिसाइडल. सो three kind of poisoning are there. Poisoning is because of the three reason. So what are the reason? First reason is the accidental ingestion of poison. Second reason is nothing but the intentional ingestion or suicidal intent poisoning. Third reason is the homicidal, मारने के लिए. So doesn't matter what is the reason for poison, you have to understand the antidote used in the poison. Now what is antidotes? So paracetamol का antidote होता है N-acetylcysteine. So if you got a poisoning due to paracetamol, so antidote is nothing but the N-acetylcysteine. That is the first, and if it is not available, second is nothing but the methionine. Most of the बच्चों को ये मालूम होता है N-acetylcysteine. एग्जाम जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन सेकंड मालूम नहीं था, methionine is second. So N-acetylcysteine and methionine, these are the antidote for paracetamol. So if you are suffering from poisoning due to mercury, arsenic, copper, these are the heavy metal. So in that you have to use BAL. What is BAL? British Amebocide Levisite. British Amebocide Levisite. That is known as a BAL. British Amebocide Levisite or Levisite, known as a BAL. Okay. So it is a chemical chelator. Now if you are suffering from atropine poisoning or other cholinergic agonist poisoning, in that case physostigmine is the antidote. If you are suffering from carbon monoxide, oxygen is used as an antidote. If you are suffering from cyanide poisoning, in that dicobalt EDTA or amyl nitrate followed by sodium thiosulfate, sodium nitrite is the antidote. ये इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है रिसेंटली. सोडियम नाइट्राइट एंड सोडियम थायोसल्फेट इज एंटीडोट फॉर साइनाइड पॉइजनिंग. ठीक है, याद रखो. नाउ इफ यू गेट पॉइजनिंग ड्यू टू मिथेनॉल एंड इथिलीन ग्लाइकॉल, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में, गावठी दारू पिऊन 50 लोकांचा मृत्यू. का आला गावठी दारू कशा होती? सो जो रॉ अल्कोहल होता है, व्हेन देयर इज अ फर्मेंटेशन ऑफ रॉ अल्कोहल by the village people, so ethanol is generated, but some amount of methanol is also generated. Methanol is a poison, okay, and due to that a lot of poisoning happens. So in case of methanol and ethylene glycol poisoning, what is the antidote? Ethanol 4-methylpyrazole. 4-methylpyrazole. 4-methylpyrazole, it is known as a fomepizole. It is known as a fomepizole. What is that? Here is the name, fomepizole. 4-methylpyrazole means fomepizole. मिथेनॉल के पॉइजनिंग में इथेनॉल भी यूज कर सकते हो. इथेनॉल इज यूज्ड इन द पॉइजनिंग ऑफ मिथेनॉल बिकॉज दे आर अ कॉम्पिटिटिव agonist, they are a competitive substrate for the alcohol dehydrogenase enzyme. Now lead poisoning में होता है calcium disodium ethylate, diamarctosuccinic acid. Nitrite poisoning में methylene blue is the antidote. Opiates poisoning in that you are naloxone, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. बेंजोडाइजिपिन का ओवरडोज हो गया, पॉइजनिंग हुआ था, एंटीडोट है फ्लोमाजेनिल. ऑर्गेनोफॉस्फोरस का एंटीडोट है एट्रोपिन एंड प्रेलिडोक्सिन. देखो क्वेश्चन हर एक के ऊपर आ चुका है, ये आपको बाय हार्ट याद ही होना चाहिए. सो ओपाइड्स एंटीडोट इज नथिंग बट नैलोक्सोन, क्वेश्चन आ चुका है. बेंजोडाइजिपिन का पॉइजनिंग हुआ था, व्हाट इज एंटीडोट? फ्लोमाजेनिल, क्वेश्चन आ चुका है. ऑर्गेनोफॉस्फेट का पॉइजनिंग हो गया था, एंटीडोट क्या है? प्रेलिडोक्सिन. प्रेलिडोक्सिन is a specific antidote for organophosphorus poisoning. Atropine also can be used, but pralidoxime is a specific antidote. इस सब के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. हिपेरिन का पॉइजनिंग हुआ है, सो प्रोटामाइन सल्फेट,
At that time also I have told you when I was discussing about the coagulant anticoagulant, उस टाइम बोला है हेपरिन क्या है मोस्ट एसिडिक कंपाउंड, पोटेशियम सल्फेट क्या है बेसिक. Okay? So again, if you are having poisoning due to tricyclic antidepressant, sodium bicarbonate is poison. Okay? साइनाइड में मिथिलीन ब्लू यूज करते हैं. इथिलीन ग्लाइकॉल का पॉइजनिंग हो गया तो फोमिपाजोल और इथेनॉल, मिथेनॉल का पॉइजनिंग हो गया था इथेनॉल एजेंट. देन यहाँ पे ना यहाँ पे आयरन है. सो इफ यू आर गॉट पॉइजनिंग ड्यू टू आयरन, आयरन का पॉइजनिंग हो गया आपको इफ यू हैव पॉइजनिंग ड्यू टू आयरन. और फेरिस इफ यू हैव पॉइजनिंग ड्यू टू आयरन, आइसोनियाजाइड नहीं है. इफ यू आर हैविंग पॉइजनिंग ड्यू टू आयरन और फेरस देन डेफेरोक्सामाइन, डेसफेरोक्सामाइन इज द एंटीडोट. इसके इसका भी अपन ने देखा है डिस्कस. सो इफ यू आर पॉइजनिंग ड्यू टू इंसुलिन, ग्लूकोज इज द एंटीडोट. इफ यू आर पॉइजनिंग ड्यू टू कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, कैल्शियम ग्लूकागॉन और इंसुलिन. एस्पिरिन का एंटीडोट होता है सोडियम बाइकार्बोनेट. बीटा ब्लॉकर्स का एंटीडोट होता है फाइसोस्टिकमाइन. इफ यू आर पॉइजनिंग ड्यू टू हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, कैल्शियम कार्बोनेट इज द एंटीडोट. इफ यू हैव टॉक्सिसिटी ऑफ methotrexate, leucovorin इज द ड्रग. काउमेरिन एंटीकोगुलेंट का पॉइजनिंग हो गया तो उसका एंटीडोट है विटामिन के. क्वेश्चन इसके ऊपर भी आ चुका है. आई विल मार्क वंस अगेन कहाँ से क्वेश्चन आ चुका है. एक क्वेश्चन आया था पैरासिटामोल का एंटीडोट क्या है, ये नेस्टिसिस्टिन एंड मिथिनिन. ये लियोमेटल का एंटीडोट क्या है, बाल, ब्रिटिश अमीनो लेविसाइड. देन एट्रोपिन का एंटीडोट होता है फाइसोस्टिकमाइन. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है. साइनाइड का एंटीडोट क्या होता है, सोडियम नाइट्राइल सोडियम थाइसल्फाइड. क्वेश्चन आ चुका है. देन मिथेनॉल का पॉइजनिंग हो गया तो एंटीडोट क्या है, फोमिपेजोल. ओके, फोमिपेजोल ये क्वेश्चन आ चुका है. मिथेनॉल पॉइजनिंग और इथिलीन ग्लाइकोल पॉइजनिंग. ओके, देन ओपॉइड का पॉइजनिंग हो गया. सो व्हाट इज एंटीडोट, नैलोक्सोन, नैलोक्सोन, नैल्ट्रैक्सोन एंड नैल्बुफिन. देयर आर थ्री एंटीडोट्स, नैलोक्सोन, नैल्बुफिन एंड नैल्ट्रैक्सोन फॉर ओपॉइडल पॉइजनिंग. अगर आपका मॉर्फिन का ओवरडोज हो गया या फिर कोडिन खा लिया आपने बहुत ज्यादा तो नैलोक्सोन यूज करेंगे. बेंजोडाइजिपिन का ओवरडोज हो गया जब फ्लोमाजिल. क्वेश्चन इसके ऊपर आ चुका है. ऑर्गेनोफॉस्फेट के लिए कौन सा एंटीडोट, प्राइलिडोक्सिन. इट इज अ कोलिनेस्टरेज एक्टिवेटर. व्हेन आई विल टीच यू sympathetic parasympathetic nervous system drug acting on that system, at the time I will tell you. I have already told you what is the antidote for heparin, protamine sulfate. तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है. बस ये पूरे टेबल के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, एक दो ड्रग छोड़ के, एक दो ड्रग छोड़ के, क्योंकि पूरा मुझे बोलना पड़ रहा है फिर से. रिमेंबर, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. यहाँ पे आयरन है, आयरन. तो इफ यू गॉट पॉइजनिंग ड्यू टू आयरन, डेसफेरोक्सामाइन इज द, ये ल्यूकोवरिन के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. दैट इज अ पॉइजनिंग ड्यू टू methotrexate, ल्यूकोवरिन इज यूज्ड. विटामिन के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. कामेरिन एंटीकोगुलेंट का पॉइजनिंग हो गया तो विटामिन के इज द एंटीडोट. So very important. Okay, we will see the next. So there are certain drugs which can cause you toxicity, like hepatotoxicity is caused by these drugs.